Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the characteristics of enzymes. So let's move to the whiteboard. So characteristics of enzymes. So dear students, the enzymes, which we call them as the biological catalysts or biocatalysts, have certain characteristics. So first of all, their shape. The first point is regarding the shape of enzymes. जी तो डियर स्टूडेंट्स बताएं ज़रा कि एंजाइम्स की शेप क्या होती है. चैप्टर नंबर 2 डिटेल से पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं दैट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ा टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. दो तरह की प्रोटीन्स पढ़ी थी हमने, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स. तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स इनमें दे आर फंक्शनल प्रोटीन्स, और जिसमें हमने एंजाइम्स, हार्मोन्स, इनके एंटीबॉडीज, इनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी. सो दे आर ग्लोबुलर इन शेप. और इनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर? यस डियर स्टूडेंट्स, they have tertiary. The tertiary structure is important. इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा कि मैंने जितनी भी डायग्राम्स बनाई हैं और आगे चलकर हम जितनी भी डायग्राम्स बनाएंगे एंजाइम्स की, सो दे आर ग्लोबुलर. ग्लोबुलर मतलब दे आर लाइक स्फेरिकल, लाइक दिस. हमने तमाम शेप्स कुछ इस तरीके से बनाई, मीन्स somewhat rounded, clear, like this, round, globular. So this is globular shape, clear? So that is the active site. Now the speed. So the enzymes, dear students, work millions of times faster in order to convert the substrate into products. Clear? तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट जो करते हैं, सो मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर. अगर हम देखें सो विद इन सेकेंड्स, और सेकेंड्स अभी जो माइक्रो सेकेंड्स होते हैं उसमें ये सारे काम कर रहे होते हैं. इतनी इनकी एफिकेसी होती है स्पीड ऑफ वर्किंग. क्लियर? The next point is their presence do not change the physical
or chemical properties of the products. मतलब कि जितना मर्जी उसके ऊपर ये एक्ट करेंगे, बट इनका कोई हिस्सा, इनका कोई केमिकल जो एटम है या कोई भी चीज है, वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी. उसकी केमिस्ट्री को या उसकी फिजिक्स को, मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, प्रोडक्ट्स की, उसको कभी भी ये ऑल्टर नहीं करेगा और ना उसके अंदर शामिल होंगे एंजाइम्स. इसी तरह से स्टूडेंट, ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज they are required in small quantities. Like the vitamins. Vitamins भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और उनका भी बहुत अच्छा फंक्शन होता है. छोटे छोटे माइनर क्वांटिटीज में होने के बावजूद उनके जो इफेक्ट्स होते हैं हमारी ग्रोथ के ऊपर, हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, वो बहुत अच्छे होते हैं. उसी तरह से एंजाइम्स होते हैं डियर स्टूडेंट, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. You may put it into the heading quantity. ठीक है, so small quantities they are required. They increase the rate of a chemical reaction without being consumed. इनका काम क्या होता है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो रेट होता है, उस पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट होता है उसको इंक्रीज तो करते हैं, लेकिन ये खुद इस्तेमाल नहीं होते, बट एट द एंड ये उसी तरह से वापस मिल जाते हैं. लाइक जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. लेट्स सपोज this is an enzyme and here is its substrate here. So what happens, it forms the enzyme substrate complex, initially a temporary structure here, and after that this is enzyme and this is the substrate, and here is enzyme substrate complex, and after that the substrate is converted into products. So these are the products. And again, the enzyme is ready to be reused. So these are the products, and this is enzyme. So this is what they increase the rate of a chemical reaction without being consumed or used.
यानी फिजिकली ये इस्तेमाल उसमें नहीं होते, मतलब कि किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में इनका कोई केमिकल या के जो एटम है वो इसमें ऐड नहीं होता। ये वापस प्रोडक्ट्स बनवाने के बाद वापस एज इट इज ये दोबारा से रिसाइकलिंग के लिए तैयार है। क्लियर? नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, another characteristic of enzymes. The enzymes are very sensitive even to a minor change in its pH or temperature or substrate concentration. Or substrate concentration here. So enzymes are very very sensitive, बहुत ये हसास होते हैं। हर एक एंजाइम को एक पीएच चाहिए, एक मखसूस पीएच चाहिए उसको सही तरह से काम करने के लिए। लाइक जो एंजाइम्स हैं इन द स्टमक, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से डिस्कस करेंगे इन न्यूट्रिशन। सो जो एंजाइम, और इससे प्रीवियस ग्रेड्स में आप ये पढ़ के आ चुकी हैं, स्टमक कैविटी के अंदर जो एंजाइम मौजूद है दैट इज पेप्सिन। सो पेप्सिन जो है डियर स्टूडेंट्स ये एक्ट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर। स्टमक के अंदर जो पीएच होती है वो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3, इट्स हाईली एसिडिक, क्योंकि वहाँ पर रिलीज होता है HCl, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट्स कंसंट्रेटेड फॉर्म। वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज होने की वजह से वो काफ़ी एनवायरनमेंट जो होता है वो एसिडिक हो चुका होता है। तो पेप्सिन को सही तरह से एफिशिएंटली वर्क करने के लिए चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, like the pancreatic lipase, pancreatic amylase, the other enzymes like the trypsinogen. So these are the enzymes which require an alkaline medium, क्योंकि जो pancreatic juice secrete होता है it has got some alkaline pH. Clear? तो इसी तरह से arginase, आगे चलकर इसके हवाले से कुछ discussions भी आएंगी। Like the salivary amylase, it requires alkaline pH. Clear? So every enzyme requires a specific pH. So if its pH is changed, even if there is a minor change, the enzyme does not work properly. Clear? And same is the condition of for the temperature. अगर हर enzyme को काम करने के लिए एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है। आगे चलकर इंशाल्लाह फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में डिटेल्स के साथ हम स्टडी करने वाले हैं पीएच को, टेम्परेचर को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, तो वहाँ पर मज़ीद डिटेल से बात होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर इससे टेम्परेचर कम होता है तो उनकी एफिकेसी है वो डिस्टर्ब होती है। अगर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से इंक्रीज होता है, मतलब 37.8 डिग्री से, विच इज़ अ नॉर्मल रेंज, इससे इंक्रीज करेगा, जिसको हम फीवर की कंडीशन कहते हैं या हाई फीवर कंडीशन कहते हैं। अगर उस कंडीशन में होगा डियर स्टूडेंट्स, सो एज द एंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर, सो इट विल बी इफेक्टेड। क्लियर? उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकती है। तो जो रिएक्शंस होंगे जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे। इसी तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, कुछ एंजाइम्स लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ जो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर। सो ये डिटेल्स आगे आने वाले, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सो मकसद ये है कि एंजाइम्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने पीएच के हवाले से, अपने टेम्परेचर के हवाले से, अपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से। क्लियर? नाउ देयर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक of enzymes, that is the enzymes are very specific
in nature. They are highly specific, dear students. बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं ये अपने एक्शंस के एतबार से. For example, the amylase, it will only act upon starch. It will only act upon starch and convert into maltose. So this amylase will never ever act upon the lipids. या किसी ये इवन के माल्टोज के ऊपर भी एक्ट नहीं करेगा. क्लियर? ये हालांकि माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये एंजाइम्स इतने हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि वो अपने एक सबस्ट्रेट को पहचानते हैं. दैट इज on the behalf of its on the shape of the substrate as well as its active site. So dear students, they are very specific. And like that, pepsin, it acts on the proteins. It acts on the proteins and converts it into polypeptides. So this pepsin, it will never act upon the maltose, and the amylase, that will never act upon the proteins, so it is not possible. They are very, very specific regarding their actions. And some enzymes require non-protein part. तो डियर स्टूडेंट, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ हमने स्टडी किया था और उससे पिछले लेक्चर में भी. सो द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कॉल्ड एज कोफैक्टर. तो कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको सही तरह से एफिशिएंटली वर्क करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं. क्लियर? अगर ये कोवलेंटली बॉन्ड होगा, टाइटली बॉन्ड होगा प्रोटीन के साथ, ये नॉन प्रोटीन पार्ट, so that will be called as prosthetic group. अगर ये loosely attach होगा तो it will be called as the coenzyme. Clear? इसी तरह से dear students, the enzymes they speed up the chemical reaction by lowering its activation energy. तो एंजाइम्स वो स्पीड अप किस तरह से करते हैं? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. और डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ के आ चुके हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. सो activation energy is the minimum amount of energy required to start a chemical reaction. Clear? The minimum amount of energy required to start a chemical reaction, it is called as activation energy. और ये उसको लो कैसे करते हैं? So how enzymes lower activation energy? So they have got some ways. उनके पास कई रास्ते हैं, उनमें से चंद एक आपसे डिस्कस कर देता हूं. Number one, by bringing substrate into correct orientation, मतलब कि उसको एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए जो सही उसकी सिमत है, अगर ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सीधी इस सिमत में लाकर इसकी करेक्ट ओरिएंटेशन में लाएगा, ताकि जल्द अज जल्द जैसे करेक्ट ओरिएंटेशन में ये फिक्स होगा उतनी जल्दी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा.
उतने ही जल्दी आगे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एंड बाय डिस्टरप्टिंग चार्जेस ऑन सबस्ट्रेट एंड समटाइम्स ऑन द एक्टिव साइड, क्लियर। तो उनको चार्ज डिस्टरप्ट करके, क्योंकि हमने बात की कि जो एक्टिव साइड है दैट इज द चार्ज्ड साइट, और इसके ऊपर चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अमीनो एसिड्स, तो उसको डिस्टरप्ट करके, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि आसानी के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सके। सो दिस इज हाउ द एंजाइम्स लोअर द activation energy, and sometimes they also alter the shape of by altering the shape of substrate, so they lower the activation energy. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।